Yes, sir. We are live on YouTube. Yes, Okay, yes, okay. great. Great. Uh, Okay, so I suppose that you have some questions. You asked something in Telegram, and if you have any more questions, I can answer to them as well. right, Or sir. if you would like to tell something about Nolus, about myself, about Highway first, or what would you like? Sir, let me first take 2 minutes to introduce you to my community Okay, in Hindi. okay, I think that will be better. So that because many understand English, but everybody cannot understand English. So that okay. भाई हमारे बीच में आज हमें बड़ी खुशी का ये दिन है कि रॉबर्ट पॉसिक जो कि हमारे हाईवे के को फाउंडर है और मोज़ेक गैलेक्सी, इनका जो ज्ञान है ना, 30 साल से अधिक का अनुभव है इनको, 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने इसकी शुरुआत जो की थी, ये आपके 1983 में इन्होंने की थी शुरू। और हमें बड़ी खुशी है कि ये हमारे हाईवे के मुख्य फाउंडरों में से एक है, ये प्रोजेक्ट हाईवे के को फाउंडर। और साथ में इतना ही नहीं, हम को फाउंडर की बात में इनका जो व्हाट यू कॉल जो रुतबा है इसमें काम करने का, वो कुछ इतना अच्छा है कि इनको वर्ल्ड लेवल की अथॉरिटीज भी आज जानती हैं। इनकी मेन जो फंक्शन है, फंड रेजिंग स्ट्रेटेजीज, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, डेफी फाइनेंस के ये एक्सपर्ट है। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ बाकी मैं इनसे विनती करूंगा रॉबर्ट जी से, बट सर आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव सम ऑफ योर मतलब इंट्रोडक्शन टू अस, एंड देन समथिंग अबाउट Mosaic Highway, and thereafter we will start question you, and who will raise hand, we will call him if they explain. भाई आप जब हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उसकी अंग्रेजी करके इनको बताता रहूंगा। थैंक यू सर, स्टेज इज योर सर। थैंक यू। Okay, okay. Thank you. Thank you. So I just want to tell you that here is with us Luciano Angiola. He is actually Italian, but he's living in Hungary for 30 years. And he is actually in your upline. And almost all international community is in his network. So I told him to be with us here today. And of course, maybe he will also answer some of the questions. Hello, thank you. It's a Hello. pleasure for me to stay here with you today. And I see a fantastic work. I see everything. And I'm very proud of the Asian group. थैंक यू सर, वेलकम यू सर। Welcome. Thank you. Okay, so actually, yeah, in short about me, can I share the screen? यस सर, Yeah. I need approval. You just Just make him अप्रूवल गिवन सर। Okay, so actually, I will share first this slide. So LinkedIn is a social network for business people. So you can check us there because I'm for a long time there. Here is my wife and actually my two sons. And I have 5 sons. I will be this year 60 years old. I'm a computer programmer. So I have started with programming in 82, 83 when I was in high school. And last 30 years, I'm in network marketing and direct sales. Okay, so I have a lot of experience in sales, marketing, communication, leadership, and so on. And I'm 4 years in Novus Prime. Actually, since the beginning of Novus Prime, our first project was Mosaic Chain, Mosaic follow-up platform, Mosaic Alpha, and Mosaic Blockchain.
and Highway is our second serious project, because Mosaic Chain is a very serious project. Mosaic Alpha is a little bit smaller, and Highway is also a little bit more serious project. And we will have Yieldy application, which will be built on the top of Highway, and Highway is built on the top of Mosaic Chain. Okay, so yeah, we are working with Nose Prime 4 years, and I don't know. I have checked in last 10 years more than 1,000 projects, like crypto MLM projects, and I didn't invest in any of them. I didn't invest in any of crypto MLM projects because I checked them. I saw that or they are not legal, or they are not good business proposal, business idea. So this is the first one and the only one where I'm investing my money, and I have invested a lot. Okay. So behind me, you see some validators. So I'm mining Mosaic coins here. I have 12 Validator Pro. So it is about $300,000 invested in Mosaic Chain. And I have a lot invested in highway relayers. So actually, I'm not sure. Maybe YouTube will cut this out from the recording because they don't like when we show our back offices and so on. But you see that I have invested $720,000 into this business. And you can also see that I have earned almost $1.3 million in commissions. So these commissions are those which you can withdraw. It is in USDT or USDC, and you can withdraw it whenever you want. You can also see that my network has made more than $20 million turnover in 4 years. Our company together has made $37 million, but not everyone was invited by me, but everyone is in my binary. Okay, so everyone is my binary, so I can see the turnover of whole company. And this is my list only for this month. I will check it. So it is $627,000 turnover only this month. I had about 665,000 in December, and around 400 and some thousand in November, and 500 and some thousand in October, and so on. So I'm making more than $500,000 turnover per month. Of course, I had some better months. Sometimes I had more than 1 million or 1.2 million per month. So actually, I just wanted to tell you that yes, you can earn some money here, good money, good commissions. You can check us on on LinkedIn. When you click to someone, you can see his educations, previous jobs, and everything else. Okay, so you can learn everything about us, and you can check also. Just a minute here. My other contacts, because I saw here other contacts. Yeah, he's Nenad Taskovic. He's my partner here and co-founder. So you can check him too. I will put it here into chat. So you can use it if you need new chat. Everyone, oh, just a minute. Who can see chat disabled? Oh, sorry. Maybe I can send to you to host. Yeah. So you can put it here later, and you can put mine. Okay. And let's say other important people here are, let's say, Alex Dimitrievich. Alex Dimitrievich first. He is actually our sales lead.
He's responsible for go-to-market. I will put it here into chat as well. Okay. And you can check as well his brother, Philip Dmitrievich. Philip Dmitrievich. It is his brother. And he joined us as well. And you can check, let's say, Stefan Šopić. He joined us 2 weeks ago. You can check their previous connections. You saw he was vice president of engineering in Moondance Labs. He was in Parity the Technology, director of engineering, interim head of engineering, and so on. So actually, he was one of the members, core members in Polkadot with Dr. Gavin Wood, with the founder of Polkadot, and so on. So he is in our team. This guy is really, really. I spoke with him first time 10 days ago, and he's very, very smart guy and well known. So he is one of the most popular people in Polkadot. So anyway, you can check us. I can also share, stop share and share again. Let's say this is our presentation. I will show you just few slides and I will try to watch it here. Okay. So yeah, you know about Highway, you know about our company. Here is what we have built until now: Mosaic Alpha, Mosaic Launchpad, Mosaic Chain. These three are finished. Mosaic Horizon is in planning still, so we are not developing actively it now. Highway is the new product, and this is your chance. I think that this is your chance. Here are some of awards we have received in 2022, 2023, 2024, 2025, and so on. So our teams received a lot of awards on different conferences and so on. Okay. So what we are building Highway network, and it is connected with Mosaic blockchain. Mosaic blockchain is a part of Polkadot ecosystem. So Mosaic chain is parachain in this ecosystem, but it is also independent blockchain as well. And we want to connect this ecosystem with Mosaic chain through Highway. We want to connect with all other blockchains, but you can also communicate. If we connect Solana, Ethereum, and Binance Smart Chain, then they can connect between each other. So Solana can connect directly with Ethereum through Highway. Ethereum can connect with Binance Smart Chain through Highway. And this will be the first decentralized, distributed, completely safe, fast and cheap bridge. So bridging is a huge problem. Lack of bridging is a huge problem in blockchain industry, and we are resolving all of them. Okay, so that's what we are building. Here is our roadmap. So we want to launch our MVP. What is MVP? MVP is minimal viable product. So minimal usable product. Our first plan was to connect only Solana first and to make some token transfers and so on. But in October and in September and October, we have decided to connect in this MVP version Ethereum and Binance Smart Chain, and not only Solana. So actually, with these three blockchains, we are covering 70% of the market. Okay. So I will check here. If you go to CoinMarketCap, and I will show it to you as well. So let's share it again. Screen one. Okay. So if you go to CoinMarketCap, you will see that Ethereum has at this moment, because it went down, it was $500 billion
a few months ago. It is now $340 billion market cap of Ethereum. BNB about $117 billion, and Solana is around $66 billion. So actually the market went down a lot. Oh, it is under $3 trillion now. So fear and greed index is very, very low. Okay, anyway, yeah, it will go up again. Don't worry, it will go up again. So anyway, with these three, let's go back to our, let's share screen too, okay? And let's go back here. Okay, so we will launch our MVP in May. So from May, you will start receiving some income in Highway coins, transactions fees, and arbitrage. So one of the question was to explain arbitrage, especially how are you receiving income from arbitrage. This is not fixed yet, okay, but I will tell you what is our plan. We are planning to collect money for liquidity, okay? That's why we have new type of promotion, but actually in Pakistan and India you have better promotion. In the rest of the world we have some other promotion with liquidity, and we are collecting liquidity, and we will launch our internal arbitrage tool, and profit from it will go to relayers, only to relayers. From the profit, 20% will go to the owners of liquidity, 80% will go to relayers. From that 80%, relayers will receive 50% in USDC, and from 80%, actually 40% is half of that. 40% is you will receive in USDT, and you can do whatever you want with that. And 40% you will receive in liquidity tokens, so that money we will reuse for arbitrage, because we want to grow the money for arbitrage, because if we have more liquidity for arbitrage, we can make more income every month. So anyway, this is not fixed, as I told you. This is my idea, and I have to discuss it with the team. But this is the best decision for us, the best thing. So whatever we do, we will do the best thing, what is best for us, okay, for our community. It is very important as well to understand that we are building decentralized solutions, okay? So Mosaic Chain is decentralized. Who is the owner of Mosaic Chain? We, validators. There are 2,400 validators in the system. I have 12 of them. So I have 0.05% of the of this everything. So I'm not the owner. Developers are not the owners. Okay, so community is the owner of the blockchain. And the same will be with Highway system, because Highway is not a blockchain, but it is working very similar to blockchain. So it has it economy, tokenomics, it has fees, it has newly minted coins, and it has internal arbitrage engine. Okay, so profit tool, let's say. And so we will be the owners of the Highway network, not the developers. They will buy some nodes, but not too many. Not because they don't want or they don't have money for it, but because they don't want to own a big part of network, because we want to have decentralized, trustless, transparent system like it should be. Okay, so
after we launch MVP, we will continue developing. We will later develop version 2.0. I hope to the end of this year. And after that, I'm not sure that we will sell like this anything more, but we will probably have for network some other products. Okay. So I didn't tell this ChatGPT told me this when we have finished planning of this system, that we are changing blockchain history, and this is a revolution in how assets and messages travel between chains. Okay. So yeah, about there was another question. So you have some really special offer, and I don't want to, when we have this kind of special offers for some market or something, then you cannot put the information to your Facebook or to YouTube or somewhere, because we don't have that special offer for Europe, for Hungary, for Italy, and so on. And if somebody from those countries see that, oh, in Pakistan and India we are giving them something special, oh, we want to get it too, and so on. So if we give you some special offer, please don't put. So I will not today talk about it. I will tell you in your close group or privately to your leaders and so on. But if you have special offer, don't use it publicly, okay? And special offers are almost always limited time offers, okay? So maybe the special offer will be valid for next 1 month or 2 months or 3 months, but 4 months from now, new people will not have that special offer. Why? Because first 3 months, 4 months from now, our system will be live. Highway will be live. In second half of this year, the price of the every package will go up at least 20%. Okay, so the price, so what is now $5,000 relayer, it will be 6,000. What is now 10,000, it will be 12,000. Okay, so every relayer will go up. And when we finish the version 2.0, after that, we will not sell any more pre-sale. So what is the pre-sale? The pre-sale is the best option, the cheapest option, the best time to get in, but we still don't have a live product. When we have the live product, then we cannot do the pre-sale, because pre-sale is before we launch something. Okay, so that is what you have to understand. About Bloxico, so company is here since 2018. Actually, for crypto company, it is a long time, because crypto companies have started in 2015, 2016. So if some company is working since 2018, it is old company because they are still opening new companies. So for 7, 8 years, a lot of things happened. Okay. And not just that, what is very important is that the leader and CEO of company is Nenad Tanskovic. And very important to know about him, he is 63 years old. He's mathematician, engineer, IT engineer, and actually 25 years ago, he developed with one huge team in South Africa. He developed software for risk management in finance in real time. And it was the first software of that kind. First software for real-time risk management in finance. And he built it for Merrill Lynch company, which was acquired by Bank of America in 2008. And Bank of America is still using his software for risk management. Okay. And he has sold it to Deutsche Bank, to Bank of Scotland. So he was really
in top of software development, organizing IT teams, and so on. So it is very important that we have somebody with this kind of experience. And he is leading Bloxico for 8 years. They had 35, 40 companies, clients. So he was developing different things for many famous companies. So he worked with more than 100 developers, so he has a huge experience. Okay, so Alex Dimitrievich, Andrea Markovic, yeah, software packages, here are software packages, but you know that you have some special offers. And I will just comment your question, how do you know that 10% is going to Bloxico? Well, if you pay that 10% and Bloxico gives you discount, special discount, that why do you think that it is not going to the Bloxico? How they know that you have paid it? Okay, so don't worry. Okay, you have special offers, and you just have to know that this special offer is because of Rafi, because we are working with Rafi for 3 years. And he was building this business when it was very, very hard to build. Very hard to build. Because when we have started, we didn't have the blockchain, we didn't have the Mosaic Alpha copy trade platform, because Mosaic Alpha copy trade platform is launched in April 2023. And Rafi has started working with us in 2022. Okay, so he was here when we didn't have finished product. And believe me, it was so difficult to sell because there were so many scams on the market, and they were promising this and this and this. And to us, they always told, okay, oh, how can we trust this team? How can we know that they will finish it? How can we know that it will be good and they will not run away with our money and so on? So that was our problem at the beginning. And now you don't have it because we have a company with 4 years experience, with some serious product developed and so on. And now it is easier. So I just want to tell you that you are here at right place, right time, okay? So this is that liquidity boost promo for the other markets, for European Union and so on. Very important to understand that you can earn free packages. And actually you have special offer again for Pakistan, India, Bangladesh, and so on. You can start with nothing and still end up with everything that matters. Commission types, very good marketing plan. You saw, I can show you. I see how many people, there are more people than it was at the beginning. So I can show you again my back office. And you can see here, so for $20 million turnover, I have received 1.3 million commissions. So actually it is not bad. It is not bad. You just have to make a huge turnover, okay? And you can do it because you can join. Oh, I'm not showing it to you. Sorry. Actually, this what I wanted to show. Okay, just a minute, yeah. So here you can see $20 million turnover and 1.3 million. It will be very soon. 1.3 million. Okay. So I will put it back here to second screen. So here is good business, good developers, good. Yeah, I don't know if you have seen this highway space. This is our web site. Oh, I'm not showing it to you. Sorry. So this is our website here. And just a minute. It is a little bit slower here, loading of the site, because because I have many validators here behind my back.
And you can also check here this eld.io. Okay. And it is also slower because of Zoom. Okay, it will be here soon. I hope. Okay, so and of course I can copy this to your chat, and you can copy it to everyone. And ELD, here it is. Okay, let's copy that. Okay, so use this everything. And yeah, that's it. So anyway, if you have any questions, let me know. Here we are. We have about 15-20 minutes now. Sir, thank you very much. Or you want to say something to translate to, and also encourage them to ask me questions. Yes, sir. Thank you very much, sir. You have explained in detail. Sir, we need your permission. Can we dub this video in Hindi and show to our or no? If you permit. You can use this video. You can use this video. Yeah, of course. You can use the recording. You can send it to your team, of course. Now we want to dub it first in Hindi. Thereafter we will, otherwise they will not understand in English, na? Oh, you want to translate it? Aha, okay. Yes, we will dub it. You will be speaking, but then you will be speaking in Hindi. Then we No will problem. send it to. No problem. Thank you, sir. No problem, of course. We need your that permission. Second, a little bit, sir, regarding arbitrage. You told ki 80% of the income of arbitrage will go to the relayer, and out of it, 40% means half of it will be available in USDT or the USDC, or 40% will go to the liquidity token. Means the ID will increase its liquidity to have more business attracted to it. That is Yes. the purpose of this, na? Yes, and that liquidity tokens will be frozen for 1 year. Okay. So whatever you earn this month, 20% is going to those people who gave initial liquidity. Okay. 40% is going to you in USDC. You can do whatever you want, and 40% of the profit will go into liquidity token. It will be your liquidity token, but it will be frozen for 1 year. After 1 year, we can encash it in USDT. Yes. Thank you, sir. That was that is very important for us, because everybody here says what will go in our pocket. That was more important to explain to them, sir. Yeah. Satyo, Anji. Yeah, Yes, I sir. just wanted to tell you something very important. You know, I told you I'm computer programmer and I'm businessman. I'm in business for 30 years. So I have made in my first business I have made about $1.5 million. In my second business I made about $1.5 million. And this is my third business where I made more than $1 million. Okay. But believe me, the biggest investment, the best investment is what you see behind me. Because these Validator Pros, in 5 years from now, it will have value maybe $50 million, maybe $100 million. So this behind me, this is the most important thing what you can earn here. Okay, you can buy some with your money, but you can earn much more with building network. And this will have 5 years from now, not in May now, not in December this year, not next year. Just check it. Check. I will show you something. I will show you something very important. Share the screen. Share the screen. Let's say I will screen one share. Okay. So please check the Binance Smart Chain. I will push it here. Binance Smart Chain. Let's check Binance Smart Chain.
So check this. So you can see here, it was 2018. Okay. So they have started with 11 cent. It is like we are starting Mosaic chain with 10 cent now. Okay. And after that, it went go to $2 to $8, for $11, so on. But look at this. So 1 year, but you know, they have developed blockchain 2.5 years. 2.5 years. And you see, 2 years later, it was still around $16. Okay. But then, after 2 years, 2.5 years, it went up to $500. Okay. So it went up here to $630. I hope that you see these small numbers. Okay. Yes, yes, sir. Yes. So it was here, let's say, from 2018. Then they have started to develop Binance Smart Chain. 2.5 year later, they have finished Binance Smart Chain. And then 4 years later, the value was $1,180 of one coin. Okay, so one BNB was $1,100. So check this. I have received 3 million Mosaic coins. So now it has 10 cents the price, but of course I will not sell it. Okay, but if it will be $1, it will be 3 million. If it will be $10, it will be 30 million. If it will be $100, it will be $300 million. Okay, so don't, most people want to get rich after 6 months or 1 year. Okay, you can earn a lot of money with this. I'm earning around $250,000 or $300,000 per year. You can do it too. Okay, you can earn with network marketing. It is the fastest way of earning. But the really big money is if you have infrastructure like you see behind me. This is the real money. This is how you can become rich. But not in 1 year, but in 4-5 years. Very important. Sir, can we take some questions? Yeah, of course, I see some hands there. Yeah, of course. Okay, sir. Okay, sir. विजय टारे जी, आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। और भी कोई पूछना चाह रहा है वो हाथ रेज करिए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। हिंदी में पूछ सकते हैं, मैं उसकी ट्रांसलेशन साहब को बता दूंगा। Hello, good day, sir. Hello. Good. Hello, good day, sir. Yeah, what is your Yes, question? Can you hear? Can you hear me? Yeah, we can. Yes, Yes. definitely. What is validator subset? What is validator? Subset. 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 Okay. So we have 2,400 validators, but every hour, 200 of them are chosen randomly into subset. And in that hour, only those 200 are validating. Next hour, next 200 validators are chosen and they are validating. So every hour, we are changing the set of validator randomly. Okay. कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? मलिक जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो ना सर, आप करो, मैं मीटिंग में ही हूँ, आराम से करने लग रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा था फिलहाल। ओके, कल मैं आपको हिंदी में बता दूंगा सारे जी। ओके प्लीज कल हम करिए। ऐसा करेंगे, एक तो इन्होंने परमिशन दे दी है रॉबर्ट जी ने, हम इस वीडियो को हिंदी में डब करेंगे और कल का वेबिनार इनके आज जो बोला है वो हम हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे,
इन्होंने हमें क्या समझाया है। डिटेल में बताएंगे हम आपको कल। ओके सर, ओके ओके। आशुतोष जी, तरुण जी। मिस्टर बलदेव प्रसाद जी हैं। जी सर, नमस्कार। बोल रहे ठीक है। हाँ, बोलिए इंग्लिश। बोलिएगा, बोलिए। इंग्लिश में तो कुछ समझ में आया नहीं सर, थोड़ा थोड़ा सर, समझ में मैंने आया। मैंने बोल दिया ना आपको कि भाई कल हम जो वेबिनार करेंगे, जो इन्होंने जी बोला है वो सारे का सारा हम हिंदी में आपको बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे इनकी इस बात को डब करने के लिए। डबिंग क्या होती है? जैसे ये जी इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे ही आपको हिंदी में बोलते हुए सुनाई देंगे। ठीक है। जी तो हम जी। टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको हिंदी में डब कर देंगे इनकी वीडियो। ठीक सर, ओके सर। आपको इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं कि भाई समझ नहीं आए कोई चीज है, हम बैठे हैं साथ में। ये भी हिंदी में बोलेंगे, आपको लिखेंगे हिंदी बोलने वाले। जी जी जी। तरुण जी, आशुतोष जी, एनीथिंग फ्रॉम यू? Okay, thank you, sir. No more question. Okay, ओके स्लाट साहब, you're ओके, Hello, थैंक welcome. यू। hello, थैंक यू, hello, थैंक यू। hello. Yeah, we hear you. या सर। सलाद सर से ये जानना चाहते हैं कि ये जो इसमें वैलिडेटर के पोस्ट हैं वो हाँ, फाइनली 6,000 यूनिट तक ही हैं कि उसके बाद भी कुछ चांसेस रहेगा बढ़ने का? ओके। Sir, he is asking, you have fixed the highway 6,000 validator. He is asking, is there any chance to increase the validator later on? I think blockchain is difficult, or it is consensus can do something. Yeah, actually, no, we are not fixing. These are our predictions. So we don't have even we have now about 1,130 relayers sold until now. I believe that until May we will have around 3,000 relayers, and to the end of this year maybe we will have around 10,000 relayers. So we don't have limit because later when we launch the relayer, later if somebody wants to be relayer he can join, but he has to buy NFT to have a right to be a relayer, and he has to stake highway coins the same amount we have like internal value. So actually, later people can come and become relayer, but when we have more and more people who want to join, then the price of highway will go up. So after some time, it will be very expensive to be a relayer. So people will think, is it optimal for me to join now or not? But for us, who bought the relayer on pre-sales price, for us it will be okay because the value it is the same like in Ethereum. So everybody can be relayer validator in Ethereum, but he has to buy 32 ETH and to stake it. And if too many people are buying it to stake it to be validators, then the price of it will go up. And 32 ETH is around, I don't know now, Total. $100,000. ठीक है। And if the price of Yes. it goes up 2 times, then it will be $200,000. So he will be not sure that it will be profitable for him. So actually the market is regulating itself. Okay, so market regulate itself. It is the good thing in this kind of economy. प्री सेल में। थोड़ा What? एक्सप्लेन करके बताएं सलाद सर, क्या बोले सर जो है। हाँ, मैं रॉबर्ट सर, आई विल एक्सप्लेन बट यू सेड इन हिंदी। Okay, okay. उन्होंने ये कहा कि ये जो वैलिडेटर है फिक्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो इनकी संख्या बढ़ सकती है, परंतु प्री सेल में इतना अच्छा मौका अभी लेने का, इस रेट से आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। 3,000 वैलिडेटर आपके मई तक बिकने ही बिकने हैं।
उसके बाद अगले फेज में जो 3,000 बोल रहे हैं वो 10,000 तक एक्सटेंड हो सकते हैं टोटल। इसका मतलब 3 और 4 7,000 वैलिडेटर ये दिसंबर तक बिक सकते हैं। अगर उसके बाद कोई बोलेगा कि भाई मैंने भी वैलिडेटर लेना है, एक तो वो कॉस्टली बहुत होगा, कॉस्टली तो अगले जून से ही शुरू हो जाएगा, 2,000 बढ़ जाएगा, 1,000 बढ़ जाएगा कॉस्ट। और 10,000 के बाद अगर कोई लेना चाहे वो इसकी एनएफटी लेनी पड़ेगी। वो एनएफटी के थ्रू रिलेयर्स के साथ ज्वाइन कर सकता है और डायरेक्टली उसको परचेज नहीं कर सकता है। तो ये बोला है। सलाट साहब है जो आपके पास ये हैं, ये तो सेलेक्ट हैं, ये तो प्री डिफाइंड होते हैं ना जिस टाइम पे ब्लॉकचेन बनती है। ऐसे तो फिर जो आपके पास ये पाइनेक्स वाले हैं, ये बढ़ा लेंगे अपने नंबर ऑफ ये नहीं, एक्सीलेटर। ये कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहले होते हैं ना सर इनके प्री जजक भी इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, इनके मुख से ही सुन लेते हैं। हाँ रॉबर्ट सर, मिस्टर क्योंकि अनिल हमने भी यही सुना था सर कि 6,000 यूनिट्स हैं, है ना, उससे उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा करके ये सुना था। हाँ, ये प्री डिफाइंड होते हैं सर ये। जी से जी पूछ जी। ले, ये भी पूछ लेते हैं इनसे। रॉबर्ट सर, दे आर आस्किंग इन ब्लॉकचेन देयर लेयर्स आर प्री डिफाइंड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, and if we wish to increase it, what is going to happen is blockchain is going to change or consensus can allow the increase of these validator. Please explain this. Actually, the blockchain, when it start, and our system when it start, it will written the rules into that system. But the rules can be that it is allowed to let somebody else to validate with some condition. You have to buy some amount of coins and to stake it, and you have rights. So this is also condition which can be written into blockchain. Let's say Ethereum. In Ethereum, it is blockchain. Community is in governance of that blockchain, and in blockchain there is a rule: we can accept new validators, but they have to buy 32 ETH and to stake it. Okay, so we will not change the rules, but the rules are allowing new relayers or validators to come in. Okay, it is already put in the blockchain. The coding is already done like that. Should I presume those? That, Robert sir? Again, a question is, Yeah, you are saying the coding already done in Mosaic chain is like that कि you can increase the validator after it yes, reaches 6,000. It is already coded in the blockchain. yes. Okay. अनिल जी और शिवान जी ये बोल रहे हैं कि ठीक है, ये ब्लॉकचेन की जो कोडिंग है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इन्होंने जो ब्लॉकचेन की कोडिंग कर रखी है मोज़ेक की, वो ऐसे कर रखी है कि 6,000 के बाद अगर जरूरत पड़ी तो वो 4,000 वैलिडेटर और प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले ही ब्लॉकचेन में ये प्रोवाइडेड है। तो इसलिए अगर पहले ही प्रोवाइडेड कोडिंग में है तो ये ब्लॉकचेन उस लेवल तक जा सकती है, ये इनका कहना है। ये Actually, मेरी I नॉलेज। yeah, जी, I will जा सकती explain. है नहीं सर, जाएगी ही, फिर वो बना के रख दी गई है, मतलब वो जाएगी ही जाएगी। नहीं क्योंकि नहीं बार नहीं बार 6,000 की बात हो रही थी ना, तो क्या है, लोगों को बताने समझाने में फिर वही चीजें होती है, नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो एक जाता है, एक फिर अलग डाउट सर, मंच मैं में एक दस बार हजार ये का। डाउट मैं क्लियर करता हूँ। जैसे रॉबर्ट सर ने बोला 6,000 वैलिडेटर्स के बाद, जैसा कि बोला गया, इनका जो हाईवे टोकन्स है वो लिस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद जो भी वैलिडेटर्स लगाएंगे, वो वैलिडेटर्स की जो आज की डेट में आपको पावर मिल रही है 7,000 डिजिटल सर्टिफिकेट्स, 7,000 जो इसके टोकन है, उसकी जो मार्केट से आपको बाय करके वो वैलिडेटर, उसके बाद आपको एक एनएफटी लेनी पड़ेगी, और उस एनएफटी में आपको 70,000 हाईवे टोकन्स कंप्लीटली लॉक करने पड़ेंगे लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आपको वो वैलिडेटर्स लाइव होगा। ओके। अब ये जो 70,000 डिजिटल सर्टिफिकेट हमको जो फ्री मिल रहे हैं,
उस टाइम उसको ये जो टोकन है 70,000 ये मार्केट रेट जो होगा इसका हाईवे टोकन का, उसके हिसाब से लेके एनएफटी के थ्रू ये वैलिडेटर में जुड़ सकता है नए में। एक है ना आशुतोष जी आपका? यस यस करेक्ट। ओके। या I will express these questions and answers. I will express it into details into your Telegram group, so you can translate it to Hindi, and then आया they will कैसे understand. तुम्हारे? जी मलिक जी। ठीक है सर, ठीक है सर, साहब। हाँ जी, ठीक है। एक क्वेश्चन क्योंकि और है मेरा सर, सलाद सर। देखिए सर, आज हमारे को मौका है, ये समक्ष है हमारे, जो भी आपने पूछना पूछिए। जी 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 जी। जी ये सर सुन। कि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमारा जो ब्रिज बन रहा है, जी हाईवे जो है, ये जी जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं अभी तो कुछ के साथ में इंटीग्रेटेड होना शुरू हो गया है, ये सब सुनाई में आया है। और जी धीरे धीरे जितने भी ब्लॉकचेन हैं सबके लिए ये काम करेगा। जी। जी, तो ये मतलब वैलिडेटर हमारे काम करेंगे। तो पहले के जो उन ब्लॉकचेन के वैलिडेटर थे, क्या उनका काम खत्म हो जाएगा या उनको कोई स्पेशल जगह दिया गया है यहाँ पे, नहीं नहीं सर, दूसरे ब्लॉकचेन के ये वैलिडेटर? ये तो मैं ही समझा देता हूँ आपको। जी देखिए, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जब बनी, उसका जो वैलिडेटर बना वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए, क्या पर्पस था, जो बीटीसी प्रोड्यूस होंगे उसको ही वेरीफाई करेगा। वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कुछ भी नहीं वेरीफाई कर सकता। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जो रिलेयर्स बने हैं या जो नोड्स बने हैं, वो सिर्फ इथेरियम की ही ब्लॉकचेन को वेरीफाई करता है। अभी जितनी भी मेजर ब्लॉकचेन्स है, उनके वैलिडेटर एक स्पेशल टेक्निक से बने हैं। वो उसी को, अपने टोकन को ही वेरीफाई कर पाएगा, क्रॉस चेन के नहीं कर पाएगा। इसलिए ओल्ड सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि भाई दोनों जो ब्लॉकचेन्स है उनको एक हाईवे से जोड़ा बातचीत करने के लिए। बट वो हाईवे हाईवे क्या, ब्रिज से जोड़ा। वो ब्रिज के ब्रिज हैक होते रहे, क्योंकि ब्रिज के पीछे उन्होंने आदमी बैठाए थे जो वेरीफाई करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, अब हाईवे का क्या मतलब, एक रास्ता है, सारी ब्लॉक चेन्स वहां हैं, वो आपस में भी बात कर रही है, अपनी अपनी लेन में चल रही है। क्योंकि ये पोल्का डॉट के आने के बाद, पैराचेन के आने के बाद, मोज़ेक चेन के आने के बाद ही पॉसिबल हुआ है कि जो हमारे हाईवे का जो वैलिडेटर है ना, इट इज द वैलिडेटर हु इज नॉट इस, मतलब वो जो अपने एक चैन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो क्रॉस चेन में जाके भी वेरीफाई करेगा। ये फर्क है पुरानी टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में। ये है सर, शिवांश जी। सर प्लीज सेम क्वेश्चन पास टू मिस्टर रॉबर्ट एंड कंप्लीटली हाँ, क्लेरिफाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रॉबर्ट जी, मिस्टर रॉबर्ट, व्हाट इज देयर क्वेश्चन? दे से कि मतलब क्या बोला था आपने हिंदी में जी, शिवांश जी? जी, मैंने कहा था सर कि जो अलग अलग ब्लॉकचेन होते हैं तो अलग अलग वैलिडेटर होते हैं। अभी हाँ, हमारा हाईवे से सभी अच्छा सुन। ब्लॉकचेन जो कनेक्टिविटी हो रही है, तो जी जी। मैंने कहा था कि हमारे जो वैलिडेटर तो सब जगह पूरे कहीं पे भी जाएगा तो रिटर्नेंट हमारे वैलिडेटर रिटर्नेंट को हो जाएंगे। हाँ हाँ, जी रिटर्नेंट जी मैं पूछता हूँ अब जी इनकी सुनो। मैंने जो अपने आइडिया से बता दिया, रॉबर्ट सर, Yes. ये दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन कि आफ्टर हाईवे वैलिडेटर्स कम्स इनटू ऑपरेशन, what will the other validator like Bitcoin validator, like other validator do? Will they become redundant? No, 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 no. No. So actually, highway relayers, they are, you can call them validators, but you have to know that they are relayers, because in proof of stake blockchain, you have validators, and they are actually governing that blockchain. Every blockchain has his own validators. Every blockchain. With Bitcoin is a little bit different because they don't have validators, they have miners. So they are still using a lot of energy, electrical energy, to mine Bitcoins. And actually they are in race who will mine
the next Bitcoin and he will get the reward and so on. So they are doing a lot of calculations. So Bitcoin network, it is proof of work. It will be always here. Bitcoin is actually digital gold. It has the biggest capitalization on the market. So Bitcoin is Bitcoin. It will always be a Bitcoin. Ethereum, it is the biggest network blockchain with smart contracts. The biggest capitalization, you saw 330 trillion, no, 330 billion dollars. So they have a huge capitalization. They have around 1 million, almost 1 million validators. Okay. And they are governing their blockchain. Highway relayers, they are connecting Ethereum with Solana, Ethereum with Binance Smart Chain, Solana with Binance Smart Chain, Mosaic chain with these three, Polkadot and 50 blockchains in Polkadot ecosystem. Everything is different blockchain. Every blockchain has something unique. Every blockchain has something which can he do easier or better than some other blockchain. Okay, so we are not replacing them. We are helping them to communicate between each other on completely safe way. Thank you. One more question, sir. Sir, Please explain also why our doubt is if they all the major blockchains unite together, can they make a decentralized portal? I don't think so, because you told in your PPT nobody is having at least 300 relayers or validators, which is required to build a decentralized cross-chain validation system. Can you explain that for them also? What is the in PPT? Can you show me that slide or something? PPT slide is these validators are not decentralized validators, and these validators are maximum validator of Cosmos is 180. And Okay. they are having less than 300 validator each blockchain. Believe. It Yeah. was Okay. Believe वो हो आयरल थे अखबार के आवे थे जो हाँ बैठ गए Just a minute. Okay, let's check it here. right, sir. Okay, no, I will close it. So I need it up. Their all blockchains are showing the validator limit of their blockchain. Okay, let's see Okay. this slide here. क्या चीज है दिख No, I know. Yeah, I know. I have to find the previous version. Previous version. Okay. So actually, This slide, sir. yeah. Okay. So actually, yeah, we are talking here about the most popular bridges. Okay, so for Ethereum has around almost 1 million validators. But with Polkadot ecosystem, it is connected through Snowbridge and Wormhole. And Snowbridge has about 25 signers, his multi-sign protocol. Let's say Binance Smart Chain is connected with Polkadot with multi-chain and Seller. And multi-chain has only 20 nodes. So we are talking here about nodes because in some case they call it validator, in some case they call it signers, in some case they call it in some case they call it node, okay? But the point is how
decentralized is it? For example, Cosmos, it is actually it is not just blockchain. It is something similar like Polkadot. It is ecosystem, and they have around 200 validators, but I suppose that at least 80 or 90 of them are in the hand of developers. So it is not decentralized. A Wormhole, it has 19 nodes, guardians, and actually, if it is in the hand of the company who developed it, okay, and maybe somebody else, maybe few companies, but it is not decentralized. It is not decentralized. It is not distributed. We cannot guarantee that 1,000 is enough or 10,000 is enough to be decentralized. We cannot guarantee. But everybody knows that, for example, we have 2,400 validators in Mosaic chain. And we know that nobody have more than 10 or 15 validators. Actually, I have 12 and one of my friends have 20. And everybody else have less than that. There are some people with 5, 6, 7 validators, but maybe 2,000 people have only one validators in 40 countries on 4 continents. Okay, so everybody knows that it is very hard to join, to organize us. We are living in different countries, speaking different languages. We don't know each other. Okay, so somebody has to organize us to cheat somebody. And because everybody knows that it is very hard to organize 1,000 people in different countries which are speaking with different languages, and usually we are not knowing each other, it is very hard to organize us to cheat. And that's why people will believe more to this kind of decentralized teams than in something where one company has 19 nodes and everybody is in their hands. So they can do with that whatever they want. Okay, that's what I'm talking. So here we are comparing some of the best known bridges which are connected with Polkadot on some way, because we are also a part of Polkadot. So if Polkadot is connected with somebody, then Mosaic chain as parachain of Polkadot can be connected with those blockchains. But what we have at this moment connected with Polkadot is not secure, it is not safe, it is slow, it is centralized, let's say some kind of centralized, because for me, 20, 30, 50 validators or 200 validators, it is not decentralized. राइट सर। तो शिवान जी ये मुझे जो समझ आया जो इन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी ये ब्लॉकचेन आपको दिख रही है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो नोड्स है उसकी होल्डिंग किसी ग्रुप के पास है जो कि उन रिलेयर्स को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, जैसे मानो हमारी मोज़ेक कंपनी के या हाईवे के 6,000 अभी वैलिडेटर है, वो एक भी आदमी ले सकता है ना वर्ल्ड का। दिक्कत क्या है? पैसा तो है। अगर एक आदमी लेगा 6 के 6,000 वैलिडेटर को, तब तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगी ना। वही कह रहे हैं ये कि हमारे जो वैलिडेटर है डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग लोग वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनके पास ये वैलिडेटर क्या हो, कर रहा था? जिसकी वजह से हाँ? हेलो, मम्मी तो को लग जाएगा। जा फिर जान तो। बाकी लोग माइक बंद करके रखेंगे प्लीज, जिनका काम नहीं है माइक बंद करके रखें प्लीज। तो शिवान जी, जो मेरे को समझ आया जो इन्होंने बोला है, तो इसमें अगर कोई और क्लेरिफिकेशन हमको भी चाहिए होगी तो हम इनसे बात करेंगे। बट मेजर आइडिया ये है, अभी तक जो ब्लॉकचेन है वो ये श्योरिटी नहीं है कि वो रियली डिसेंट्रलाइज्ड है कि अब वो एक ही आदमी ने ऑन किए हैं।
ब्लॉकचेन तो लिखी जा सकती है, बट जितने 6,000 वैलिडेटर अगर मैं ही खरीद लूंगा मोज़ेक हाईवे के, तो मोज़ेक हाईवे के वैलिडेटर मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा ना भाई। ये चीज नहीं गलत सर, है। वो बात नहीं हो रही है सर, उसकी बात नहीं हो रही है। 6,000 तो है, तो 6,000 तो डिफरेंट रीजन से ही है ना। 10,000 जो बात हो रही है ना, उसके बारे में बात हो रही थी। और बढ़ सकते हैं क्या? 10,000 से भी आगे जा सकता है क्या? बात ये हो रही थी। वही वही मैं बोला जो है। और हाँ हम यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि दूसरे जो है वो वैलिडेटर्स है, और हम लोग वैलिडेटर्स नहीं है, बल्कि हम लोग रिलेस हैं। हाँ, काम है ना, उसका ये भी समझ में आ रहा वैलिडेशन है। का, काम जी जी जी। वैलिडेशन का ये यहाँ भी। हाँ हाँ, तो बट यहाँ रिलेस पे है तो रिलेयर्स है। दोनों के अर्निंग के तरीके क्या होते हैं सर? वैलिडेटर के अर्निंग के तरीके क्या होते हैं, और इसके क्या बोलते हैं अपने रिलेस के अर्निंग के तरीके क्या होंगे? क्योंकि अपन क्या है ना, एक्चुअली में नेटवर्किंग करने के लिए नहीं आए हैं हम। वो जो रिले जो काम करेगा उससे जो अर्निंग होगी, हम उसके लिए आए हैं यहाँ पे। उसके लिए आए है हैं, ना। बिल्कुल सही जी बात। जी जी जी। जी जी जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं वेरीफाई करता हूँ सर का। तो सर, जो ब्लॉकचेन माइनिंग वैलिडेटर्स होते हैं, वो उस पार्टिकुलर उस ब्लॉकचेन के जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। बट जो ब्लॉकचेन्स के जो रिले ब्रिज जो होते हैं वो क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन बाइनेंस टू बाइनेंस किया, वो ट्रांजेक्शन उस ब्लॉकचेन का जो माइनिंग वैलिडेटर्स है वो वेरीफाई करेगा। बट एक ट्रांजेक्शन आप इथेरियम से बाइनेंस पर, बाइनेंस क्रॉस चेन पर कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन बाइनेंस का जो सेंट्रलाइज जो रिले है वो वेरीफाई करेगा, न कि बाइनेंस का माइनिंग वैलिडेटर्स उसको वेरीफाई करेगा। सिर्फ ये अंतर है सर। मतलब हमारे रिलेयर्स का काम दो ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स को जोड़ के उनके आपस में बातचीत करवाने का है। और उसके लिए हमारे को भी एक नोड की तरह, एक वैलिडेटर की तरह, हमें भी यहाँ पे जो फीस जनरेट होगी उसमें इनकम मिलेगी। एक एक्स्ट्रा फीचर जो अभी आया है इसमें रिलेयर्स में, वो है आपका आर्बिट्रेज का, जो कि बाकियों में अभी नहीं है, किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स में नहीं है। ये एडिशनल एडवांटेज है हाईवे के उसके साथ। Mr. Amar, I have to go now, ओके but ओके if you सर। have any questions, just let me know in Telegram, okay? ओके ओके I सर। will come, Thank you, come thank you back to very much, you. sir. Nice to see Thank you. you. So Nice to so see nice you. of you to come here. And sir, we You're will wish welcome. that one in on some day, it will be very. We want to have the blessing of the CEO also sometime, Okay, if okay, you of could help. course. Of Right. course. रोबोट Okay. Right. सर, Right. Thank Thank you. you. रोबोट See सर you प्लीज, guys. रोबोट सर सॉरी, सॉरी आई हैव वन वन मोर Bye bye. क्वेश्चन प्लीज। जी आशुतोष जी। प्लीज कुड यू विद द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द हाईवे वैलिडेटर्स इन द नियर फ्यूचर? नहीं, शायद सुन नहीं पाए साहब। उनका कहना है सर कि क्या व्हाट कुड बी द पोटेंशियल है, अर्निंग वैलिडेटर के क्या पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ है। द हाईवे वैलिडेटर्स इन द फर्दर फ्यूचर? नहीं, वो चले गए हैं मेरे ख्याल अब, कहीं जाना ओके, होगा नो ना। प्रॉब्लम। ही हैज लेफ्ट। कोई नहीं, टेलीग्राम उसे पूछ लेंगे ये। चलिए देखो, हमने। मेरे को तो पता था कि मैं ये चाहता था कि अपनी कम्युनिटी को भी थोड़ा उसको अट्रैक्ट वो कराते तो बेस्ट हो जाता। को नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट फिर लेके आएंगे तो ये नहीं, चलता हमने तो रहेगा। ओपन ऑफर दिया था जी, जिसने जो पूछना है हैंड रेज करें और पूछें। अब जिन्होंने हैंड आ- रेज किया और आशुतोष बोला है सर, उनको दिया गया है। आशुतोष सर, जी सर, आशुतोष सर, सोलंकी सर। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए प्लीज। जी 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 जी। क्या है इंडिया में, क्या है ना सर, मैक्सिमम फार्मूला ऐसे चलता है कि भैया कितना लगाएंगे और कितने दिन में क्या निकलने वाला है। हर कोई का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वही आता है, और हम लोग उसका प्रॉपर नहीं आंसर हम देखिए लोग दे नहीं सर, पाते इसका भैया इसका। तो इसका जो जो मोजेक का जो ऑफिशियली ऑफिशियली पीडीएफ है ना, वहां पर भी उन्होंने दे रखा है। हम्म। ऑफिशियली पीडीएफ में भी उन्होंने इसका जो है पोटेंशियल क्या रहेगा, नियर अबाउट टर्म में जो पोटेंशियल रहेगा वो ऑलरेडी ऑफिशियल पीडीएफ पे उन्होंने दे रखा है।
बट चलिए, हम ये एक अभी देखिए, अभी हम बहुत कोशिश मोटिवेट करेंगे। होके सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने पुटअप किया था क्वेश्चन। हाँ, वो चले गए हैं, उनको जल्दी होगी। वैसे भी काफी टाइम हमने ले लिया था उनका, जी जी, जितना नहीं समय तो काफी दिया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद काफी। उनको, फिर से हम नहीं, हम सुनना तो चाहेंगे आगे ये भी रिक्वेस्ट भविष्य में। करेंगे, ये भी लेकिन रिक्वेस्ट क्या कर है, लिया हम। आते हैं कोई बड़े आते हैं तो कुछ मन के प्रश्न जो है सामने रखने पड़ते हैं, और सही कोई बात है। क्वेश्चन हमारे सामने भी आ रहे हैं ना, तो वो सब चीजें जो है, हमारा कंफ्यूजन जितना क्लियर होगा उतना ही थोड़ा अच्छे से हम काम कर पाएंगे, ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा तो हमको ये समझ, क्योंकि आज तक इंडिया की बदकिस्मती ये रही कि हमको वैलिडेटर्स के बारे में ना किसी ने बताया, जी ना जी किसी ने खरीदे। क्यों क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि ये कॉस्टली थी चीजें, ये हमारे रीच में नहीं थी। तो इसलिए ये चैप्टर ऑफ कमाई का जो है ना, हमारे हाथ लगा ही नहीं आज तक। अभी शुरुआत है इसकी। जैसे मई तक हमारे को जब इनकम आनी शुरू होगी अगले फेज में, तब हम भी ऐसा अपनी आईडी खोल के बताएंगे कि भाई मेरे को इतने रिले से इतनी इनकम आ रही है, और ये मेरे की यूएसडीटी में आ रही है, ये मेरे उसमें जा रही है, ये मेरे कॉइन में आ रही है, कॉइन का रेट इतना है। मई के बाद तो हम भी बता पाएंगे ना जी, जब नहीं तो ऐसा अभी आएगा। अब सर, सर सलाह सर, अभी जो जी जी। इनकम सर मेरे ख्याल से दिखा रहे थे वो तो टीम का इनकम दिखा रहे थे शायद ना, कि रिले का इनकम दिखा रहे हैं? रिले का इनकम चालू हो गया है क्या? नहीं वो तो नहीं मई नहीं से चालू होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो हाईवे का होगा ना जी, मई से चालू। ये हाँ जो वही, जिस नहीं तो जिसके मेन तो इनकम हाईवे का ही चाहिए ना। ये सर, तो टीम हाईवे का इनकम तो होगा, टीम इनकम तो खैर वो तो जब तक के हमारे वैलिडेटर कंप्लीट हो गए उसके बाद में वो तो इनकम जीरो, एकदम आसमान से नहीं, उसमें लटक जाएगा वो सीमांत जमीन जी, में। आप सुनिए, ये जो अपना बैक ऑफिस दिखा रहे थे ना, क्योंकि इन्होंने ले रखे हैं वैलिडेटर किसके, मोज़ेक हाई, इसके मोज़ेक के। ठीक है, मोज़ेक चैन के तो आज से 3 साल पहले से काम शुरू हुआ है ना जी, उसमें इन्होंने कमाया, वो दिखाते हैं ये। क्योंकि हमारा हाईवे भी मोज़ेक चैन पे बन रहा है, और इसकी जो लॉन्चिंग है मई में होगी ना जी, मई में इसका मेन नेट लाइव होगा। जब मेन नेट लाइव होगा तभी जाके तो अपना काम करना शुरू करेगी, उससे पहले तो हाईवे का तो दिखा ही नहीं कोई सकता। ये तो जी आपको जी मोज़ेक का दिखा रहे हैं अपना। जी 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 और सर, तो जी सर। मोज़ेक का ठीक। दिखा रहे हैं, तो मोज़ेक के साथ कंपेयर हम हाईवे को भी कर सकते हैं। तभी मैंने बोला कि मई के बाद जैसे ये अपना बैक ऑफिस दिखा रहे थे, वैसा हम भी अपना बैक ऑफिस दिखा पाएंगे कि भाई मेरे पास फलाना वैलिडेटर था, उससे मेरे को इतनी इनकम इससे आ रही, इतनी इनकम इससे आ रही है। और ये तो ठीक है, अभी 10 सेंट इसका प्राइस है, हमारा भी 10 सेंट हो जाएगा, बाद में $1 भी हो जाएगा। बट बात वही है ना जी, हमको वेट करना पड़ेगा ना 10 20 50 साल, तभी तो पैसा कमा पाएंगे इससे। क्योंकि बिटकॉइन में भी जिन्होंने स्टेक स्टेक में रखा, होल्ड किए, होल्डिंग पावर जिसमें है, हम हमारे इंडियन में हमें सिखाया ही नहीं गया होल्डिंग पावर का ना। आज तक जो भी एमएलएम स्कीम्स आई, वो तो है कि भाई झट करो झट पाओ, क्योंकि हमारे माइंड में वही बैठा है अभी तक। अब हमको भी अपना माइंड सेट इन नई चीजों के लिए चेंज करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जब बड़े अच्छे एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगे अगले मई के बाद, तो अगले फेज में हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं जी, सारे मिलके। हमारे पास कुछ दिखाने को होगा। जी मलिक जी, बोलिए। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ हाँ। हाँ, वी आर रेडी फॉर दिस। मतलब मेरा मलिक जी, आज इनका बुलाने का मेरा यही था, क्योंकि कल जो आपने आपके साथ मैंने बात की, तो मुझे हम्म। सेटिस्फाइड नहीं था कि ये जो आर्बिट्रेज की इनकम कैसे आएगी, क्या वाकई ही डॉलर में आएगी, आएगी तो कितनी आएगी। पिछले कल जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ मैंने अटेंड किया, मैंने ये जो क्वेश्चन वहां पुट अप किया था। हम्म। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, इनकम तो आपको सारी की सारी जो इनकम है आपको इसमें आएगी, टोकन में। तो फिर मैंने कहा यार, अगर टोकन में यानी हमने, इसका मतलब हमारी प्रमोशन तो गलत होगी। जो हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स है, उनको तो हम्म। एटलीस्ट हम सच्चाई बताएं ना। फिर आशुतोष जी ने कहा कि भैया हम ऐसा करते हैं, आज ट्राई करते हैं इनको बुलाने की, अगर वो आ जाते हैं तो उनके मुखारबिन से ही सुनेंगे भाई क्या है। तब बड़ा क्लियर बात होगी कि 20% जो ऑलरेडी वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जाएगा, अस्सी हम्म। परसेंट जिसके पास रिलेयर है उसको जाएगा, 80% में से जो आधा है उसको यूएसडीटी में मिलेगा, आधा जो आपके लिक्विडिटी में जाएगा, क्योंकि हर वैलिडेटर को लिक्विडिटी रखनी पड़ती है ना जी, जिससे हम्म। उसका बिजनेस बढ़े।
जो कि 24 महीने के बाद आपको रिलीज हो जाएगा, सारे के सारे इकट्ठे। वो लिक्विडिटी के लिए इसलिए बोले थे सर, स्लैट सर, वो हाँ लिक्विडिटी के हाँ लिए इसलिए बोले थे कि जो हमारा 50% जो कॉइन है उसकी उस समय वैल्यू बहुत कम होगी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। टाइम पर हम उसे लिक्विडिटी में अपने में ऐड करेंगे तो उसके ऊपर जो आर्बिट्रेज आएगी नेक्स्ट टाइम से हमको और ज्यादा आएगी। और ज्यादा आएगी, बिल्कुल सही बात। हाँ, लिक्विडिटी का सर तो एक मैं, एक वो टाइम एक ऐसा रहेगा जिस समय हम अपने वैलिडेटर्स की लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकते हैं। बाद में नहीं हो पाएगी क्योंकि टोकन का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो उस समय हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, खरीद ही नहीं पाएंगे टोकन भाई। अभी तो देखिए, बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई एक 5,000 के वैलिडेटर में ये 70,000 डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो एक किस्म के ये हाईवे टोकन ही हैं। ये तो फ्री दे रहे हैं आपको भाई, कल को उनकी कीमत कितनी होने वाली है। तो ये है, जितनी ज्यादा आप लिक्विडिटी रखेंगे ना जी अपनी आईडी में, उतना ज्यादा सर, बिजनेस खींच के आपको देगी, आपकी आपका जो एट रिलीजन। एट 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 प्रेजेंट टाइम अगर आप बाइनेंस का जो रिले लगाते हो ना, हम्म। मैं भी कोई भी बाइनेंस का रिले लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लगा सकता है। बट उसके लिए आप चैट जीपीटी या कहीं से भी वेरीफाई करना, 10,000 बाइनेंस कॉइन आपको कंप्लीटली लॉक फॉर्म में स्टेक करना पड़ेगा, जो कि आप कभी भी रिलीज नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते, इंडियन कर ही नहीं सकता। कौन मतलब इंडिया एक, में नहीं, एक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता सर। कौन हाँ, लगाएगा वहां पर, देखिए साहब, क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती है। मैं तो ये मान रहा हूँ अब इस सिस्टम से, क्योंकि हमने भी नहीं किया ये सिस्टम ना, सुन रखा था बट किए नहीं थे, वैलिडेटर हमको दिए नहीं किसी ने। अब जैसे एक ब्लॉकचेन, मानो ये ब्लॉकचेन 60 साल के लिए चलती है, तो यार असली इनकम तो आपका 10-15 साल के बाद शुरू होगी ना, जब कॉइन का प्राइस ही बढ़ेगा। असली इनकम तो तब से मजा है। और वो सारी की सारी जो है, वो जो इनकम है, वो सारी की सारी पैसिव इनकम है। सोए बैठे आपको मशीन कमा रही है। अब इसने तो अपने ऑफिस में अपने पीछे सारी मशीनें लगाई है। तो हम भी कह रहे थे, मैं भी मलिक साहब को मैं भी कह रहा था कि हम भी ऑफिस में ये मशीन लगा देंगे, वही माइनिंग करेंगे आराम से, ना ना, मतलब सब्जी करेंगे। सब्जी बात रखी भाई। ठीक है सर, फिर आज का खत्म करें। कल मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये कल हो गया तो ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ा वो भी लेके हम इसको डब कर देंगे इनके वीडियो को। फिर ये वीडियो हम आपको देंगे, हिंदी में सुनाई पड़ेगा आपको, तब आपकी समझ में आ जाएगा। और कल का वेबिनार मैं, आशुतोष, तरुण जी और ये सोमासी जी, हम सब मिलके इसको हिंदी में क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सारी कम्युनिटी, कल ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो हमें भी अच्छा लगेगा। और एक 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 जो रियल मैसेज है ना, वो ट्रेवल करेगा डाउन द लाइन। हमको, ऐसा है सर, हाँ जी, सलार साहब ये जी जी सर। अच्छी प्रयास है आपका और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो। नहीं ठीक है। सर, मेरा अकेले का प्रयास नहीं है सर, ये पूरी टीम का प्रयास है। मैं तो चलो थोड़ा सा इसलिए कि भाई थोड़ा नहीं, अंग्रेजी हम बोल सबके पाता हूँ, सीनियर तो हो आप, इसलिए पर मेरे फिर को आगे करते मतलब हैं। अच्छा भी लगता है, आप है ना डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति। तो हाँ हम तो गॉड से प्रेयर यही करेंगे कि गॉड ग्रेस हमें ये जो है अपना प्रोग्राम ये कंटिन्यू चलता रहे, और अब की बार हम सबको वो मिले जो आज तक नहीं मिला, है हाँ, ना। अब मेरे को भी बिलीव हो रहा है कि हमको वो चीज मिली है जो कि हमको आज तक नहीं मिली है। हाँ हाँ हाँ, कोशिश तो हर बार की अपन ने, लेकिन वही चीज है कि सर इन मतलब है ना, स्टार्टिंग वे में या एक जर्नी है, और जर्नी भी एक सक्सेस है और लगातार ट्राई की जर्नी है। हाँ, और ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है सलार साहब, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ओके दर्शन ओके दिए, ओके। क्योंकि हाँ आपका हाँ हाँ, बिजी शेड्यूल रहता है, आपने तो बहुत इतने ज्यादा दिन सर। आज फोन भी मैं नहीं। आज मैंने ये था कि मैं आज मैं जरूर सुनूंगा सलार साहब का। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है एक्चुअली सर। ये एक्चुअली मॉर्निंग में किया था ना, इनका मैसेज आया सिर्फ 15 मिनट पहले कि मैं आ रहा हूँ। फिर हमने हम्म। फटाफट प्रोमो बनाया, फटाफट भेजा, फोन किए कि भाई आओ आओ, आज रॉबर्ट जी खुद ही आ रहे हैं, आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे नहीं, क्या है। ये कैंडिडेट जो आए हुए थे, अपने सर जो आए हुए थे, जी। God इनको bless you everyone. God bless you everyone. God bless you everyone. थैंक यू, थैंक यू। है ना, ओके हाईवे सर, प्रोजेक्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
ठीक है सर, इसको लेट अस कॉल इट ए डे। और कल ये यूट्यूब हम कल सर्कुलेट नहीं करेंगे जब तक इसमें डब नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। और मैंने आज स्पेशल कोशिश की है, मैंने 2 रिकॉर्डर लगाए हैं आज, एक यूट्यूब, एक दूसरा रिकॉर्डर, ताकि अगर एक मिस हो गया तो दूसरे में तो हो ही जाए। राइट राइट डॉक्टर साहब, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आशुतोष जी, करें खत्म? यस सर, ओके यस ओके, सर, नो प्लीज। प्रॉब्लम। गुड नाइट टू ऑल। ओके ओके।